गाइस, यप आई एम लाइव। और कैसे हो जो जो लोग भी देख रहे हैं। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो कि नहीं? सब चंगा चल रहा है कि नहीं चल रहा? जल्दी बताओ फटाफट। कितने लोग देख रहे हैं? अभी एक ही देख रहे हैं। एंड आई अज्यूम कि जिसने चैट किया है अर्चिता ने, उसी ने वही देख रहे हैं। ओके, वी हैव टू कॉन्करेंट व्यूअर्स। हाउ आर यू गाइस? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत परेशानी बता दो अभी। स्टे हाइड्रेटेड गाइस, पानी पीते रहो। ओके, सब बढ़िया। आई थिंक इट्स गुड टू गो। फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन अपने मेन काम पे ही जंप करते हैं। बिकॉज आज की लाइफ थोड़ी सी छोटी होने वाली है, 1 घंटे की होगी मैक्स टू मैक्स। एंड आई विल ट्राई कि कोई दिक्कत ना आए लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा सा डिसेंटली कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क से। एंड छोटा ही लाइव रखने वाले हैं आज का 1 घंटे का, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा और भी एक दो जगह काम पे जाना है। काम करना है, जाना तो नहीं है, करना ही है। ओके, तो वही अपन का बेसिक चीज करेंगे। पहले इंट्रो स्टार्ट करते हैं, देन आई विल गो ऑन। ओके, सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं कोड एफएम, जहां कोडिंग की बात होती है देसी अंदाज में। मैं हूं आपका अपना अजय, एंड शुरू करते हैं। एंड वेलकम टू द वन प्रोडक्ट ऑफ वीक चैलेंज के वन प्रोडक्ट ऑफ वीक चैलेंज के वीक नंबर 2 के डे नंबर 3 में। Yes, guys, we are on our day number 3, and which is the most important day of our any week, because थर्ड डे पे अपन काम किस पे करते हैं? बैक एंड पे। एंड हियर वी आर। डैशबोर्ड कल प्रॉमिस किया था, फुल का फुल रेडी है, विद द बेस्ट डिजाइन पॉसिबल। मतलब मैंने उस क्या किया ना, जीपीटी से लिखवाया, देन उसको क्लाउड को भेजा, क्लाउड ने और ऑप्टिमाइज किया, फिर मैंने थोड़े बहुत एड ऑन किए, फिर ऑप्टिमाइज किया, तो इतना करा कुरा के एक बेस्ट डैशबोर्ड, द बेस्ट प्रोसेस टू फाइंड अ डैशबोर्ड मैंने बना दिया। इतना बढ़िया मेथड यूज किया ना। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेथड क्या यूज किया पहली बात तो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यूआई कैसा है उसका, ठीक है ना? सो यूआई इज डन। आज अपन को बैकएंड पे काम करना है। बैकएंड का बेसिकली अपन को फ्लो एंड ऑल चीज रेडी करनी है। जो बैकएंड का मेन कोड होगा वो तो मैं ही लिखूंगा, क्योंकि बैकएंड का कोड अभी एज सच कोई एआई नहीं है जो लिख के दे रहा है। फ्रंट एंड के लिए देर आर सम, तो V0 वगैरह यूज कर लेता हूँ मैं, बिकॉज टाइम जल्दी ओपन, क्योंकि अपन को फास्ट फास्ट लॉन्च करना है। तो जो फ्रंट एंड वाला काम है वो V0 वगैरह करा है। जो मेन बैक एंड कोर का पार्ट है, एंड देन जो इंजेस्ट वगैरह को इम्प्लीमेंट करने का पार्ट है, वो मैं करूंगा खुद से। एंड वो मैं कब करूंगा? अभी यहाँ पे अपन फ्लो एंड ऑल सब चीज रेडी करेंगे, फंक्शंस रेडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स रेडी करेंगे, क्या कैसे होने वाला है, फाइल्स कौन सी रहेंगी, सब रेडी करेंगे। एंड हो सकता है थोड़ा बहुत कोड भी करना है, अगर मेरा मूड बन जाता है तो विल कोड ऑल्सो। देन इसके बाद आज रात को एंड देन कल सुबह आई विल वर्क ऑन द बैक एंड फुल फ्लेज्ड। एंड कल अपना प्रोडक्ट 99.80% रेडी करके छोड़ूंगा मैं। 80% तो इट विल बी रेडी टू लॉन्च। लेट्स सी, अगर 80 से ज्यादा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है अपने लिए। एंड देन कल ही लॉन्च कर सकते हैं अपन, कल या परसों लॉन्च कर देंगे अपन, फोर्थ डे पे एज अ लॉन्च डे। सो वी आर गोना लॉन्च इट। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, इट्स ऑलरेडी द प्रमोशन डेज फिक्स्ड गाइस। प्रमोशन करेंगे एंड फुल फ्लैश सब करेंगे, सॉर्टेड। फर्स्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी टाइम बोर्ड में, बिकॉज पहला प्रोजेक्ट था, वी हैड टू फिगर आउट द डोमेन, वी हैड टू फिगर आउट हाउ टू like what services we have to use for something, but उसको सॉर्ट कर लिया अपन ने। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ऑन अवर राइट ट्रैक एंड वी आर डूइंग गुड। तो यार, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आप लोग को दिखाऊंगा सबसे पहले क्या चीज, कि मैंने प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाया। यस, प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाया इज द मेन पार्ट। लाइक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा ही बेस्ट तरीका मुझे रात को मिला। एंड मेरे को भी समझ में आया कि मैंने क्या किया, बट कुछ अच्छा बन गया। तो मेरे को लगा कि भाई नहीं, कुछ तो सही किया, ठीक है। सो लेट मी शो यू। ओके ओके, लेट मी गो अबव। अब आप स्क्रीन देख पा रहे हो ना? पहली बात तो स्क्रीन देख पा रहे हो शॉर्ट पे। सो पहले क्या किया इसने मैं बताता हूँ आपको, है ना? हाँ, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा इतना। नहीं नहीं नहीं, नीचे जाना है। ओके, सो हाँ, इसने कुछ ऊपर तो किया था, कोड वर्ड लिख दिया था, देन मैंने उसको मना किया कोड वर्ड मत लिख, सॉर्ट किया। फिर मैंने इसको लिखा कि एक एड ऑन करना है मुझे, कि गिटहब नेटिव डिजाइन, क्योंकि देखो गिटहब के लिए अपन वो बना रहे हैं, एक टाइप ऑफ सर्विस है ना, गिटहब इश्यूज टू एक्शन वगैरह करके।
तो काइंड ऑफ अगर वो गिटहब जैसा ही यूआई रहेगा, नॉट 100% एग्जैक्ट, क्योंकि फिर कुछ हो सकता है दिक्कत, आई डोंट नो, बट हाँ ट्राई करेंगे कि 99% एग्जैक्ट हो। मैं तो चाहता हूँ 99, मैं तो 100 भी करना चाहता हूँ, बट हाँ मैंने इसको बोला कि ऐसा करो कि गिटहब नेटिव लगे, ऐसा लगे कि जो गिटहब के डेवलपर बैठे हैं ना उन्होंने बनाया। तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट लिखा, इसने थोड़ा बहुत समझा, इसने यहाँ पे पूरा एक लंबा सा प्रॉम्प्ट बनाया पूरे डैशबोर्ड का, पूरा फ्लो डाल दिया, ये पेज फलाना पेज 100 कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट सब इससे मेंशन कर दिए इतने लंबे में। ठीक है, ये देखो कितना लंबा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, नाउ दिक्कत कहाँ आती कि अगर मैं इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दे देता V0 को तो वो बना तो देता, कोई दिक्कत नहीं आती, वो बना देता, बट उसकी डिजाइन मतलब वो बहुत ज्यादा खराब बना था, बिकॉज वो एक प्रॉम्प्ट में इतना ज्यादा नहीं लिख पाता या इतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाता है। अगर आपको एक छोटा मतलब एक डिसेंट प्रॉम्प्ट दोगे, बड़ा प्रॉम्प्ट दोगे, बट बनवाओगे एक छोटा कंपोनेंट, तो वो मेहनत से उस कंपोनेंट को बनाएगा, एंड देन अगर आप उसको बड़ा प्रॉम्प्ट दोगे एंड बोलोगे पूरी ऐप बना दे, तो फिर वो बेसिक लेवल की पूरी ऐप बना देता है। ये चीज अपन ने एनालाइज की थी अपने पास चीजों में भी, जितनी अपन प्रोजेक्ट्स में काम किए, गेट शादी में भी एनालाइज की थी, टाइम पोर्ट में भी एनालाइज की थी, इन बहुत चीजों में एनालाइज की थी ये चीज, राइट। तो मेरे को दिमाग में आई ये चीज कि भाई इकट्ठा पूरा दूंगा तो दिक्कत दे देगा, फिर वही फालतू दे देगा यूआई, फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा। इससे बेटर मैंने इस बड़े प्रॉम्प्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, इसी को बोल दिया मैंने डिवाइड करो। देख रहे हैं किसी की कोई चैट वैट तो नहीं, किसी को कुछ पूछना है चैट वैट, चैट इज ओपन, यू गाइस कैन आस्क, है ना। अभी तो 0 लोग देख रहे हैं, बीच में 3 लोग थे, आई डोंट नो वेयर दे वेंट, बड़ा ओके। तो जिसको जो पूछना है दे कैन ऐड इट अप हियर। हाँ सब सही है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला इसको कि नाइस, आई लाइक्ड, मेरे को पसंद आया तूने जो लिखा हो, बट इसको ना 3 मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड कर। कैसे डिवाइड कर, मैंने इसको एग्जांपल दिया कि पहले में ऐसे कर कि पहले पेज का फ्लो बता दे, देन सेकंड में सेकंड पेज का फ्लो, देन थर्ड में उन पे जो थोड़े बहुत एड ऑन्स करने हैं मॉडल्स वगैरह का, थोड़ा बहुत एनिमेशन का ऐड कर दे। मैंने इसे 3 स्ट्रक्चर में बनवाया। इसने क्या किया, इसने बनाया इश्यूज टू एक्शन 3 पार्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी पार्ट 1 कोर डैशबोर्ड फाउंडेशन, तो इससे कोर डैशबोर्ड फर्स्ट वाला पेज बना दिया। इसको यहाँ पे पूरा रिलीज किया, थोड़ा सा बड़ा था, मतलब इतना भी बड़ा नहीं था, इतना सा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इसने इतना सा दिया, देन फिर मैंने बोला सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इतना सा दिया इसने, देन थर्ड पार्ट एंड देन ये कंसिस्टेंट डिजाइन थ्रेड से लेके नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप तक, ये चीज इसकी थी इनिशियल वाली। तो मैंने पहले ये चीज पेस्ट कर दी, V0 को समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम होगा, कैसे काम होगा, कि मैं तेरे को पार्ट 1 दूंगा फाउंडेशन, पार्ट 2 दूंगा एनहांसमेंट, पार्ट 3 दूंगा रिफाइनमेंट, तो ये तेरे को इस स्ट्रक्चर में काम करना है, ठीक है। देन इसके बाद मैंने इसको डिजाइन के दिया कि भाई ये डिजाइन सॉरी कंसिस्टेंट रेंज चाहिए तीनों पेजेस या जितने पेजेस हैं जो भी तू बना रहा है उसके ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर हो गया, पेज के ऊपर हो गया, एनीथिंग के ऊपर, तो कंसिस्टेंट नहीं चाहिए। तो ये चीज मैंने दे दी। देन इसके साथ मैंने दिया फर्स्ट वाला पार्ट, तो इसने एक बेसिक बना के दिया, मुझे लगा ठीक है, इट इज गुड। देन मैंने सेकंड पार्ट दिया, बेटर दिया उसने, और अच्छा दिया। थर्ड दिया तो फुल फ्लेज्ड भाई, बेस्ट लेवल का इसका बना के दिया मुझे, लिटरल सेइंग बेस्ट लेवल का। एंड 2 मिनट में मैं भी देख के शॉक हो गया था कि ये इसने बनाया। लिटरल ऐसे लग रहा है कि बाकायदा किसी गेटअप के बंदे ने आके पूरा जो उनकी कंपोनेंट लाइब्रेरी है वो दे दी है हमको, ऐसा लग रहा है, लिटरल बता रहा हूँ। अब इसकी तारीफ तो बहुत कर ली मैंने, ओके एक देख रहा है कोई, हाँ इसकी तारीफ तो बहुत कर दी मैंने, अब मैं दिखा भी देता हूँ कैसा दिख रहा है। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जा, पहले रुक जा। ओ, कैमरा दिख रहा है, मैं पहले जाऊंगा मेन पेज। अब देखना मेन पेज कैसे बनाया है इसने भाई, सामने हमारे V0 सीना। Check it out guys, this is the initial page. Select a repository to choose from the sidebar. Sidebar कैसे वर्क करता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, सॉर्टेड भाई। We can search for repositories here, we can search for anything, then nice। एंड यहाँ पे साइड लिस्ट ऑफ रिपोजिटरीज है, अभी डमी डेटा है बिकॉज वी आर ऑन अ, यहाँ पे आप देख पाओगे कि अपन लोग V0 के टेम्परेरी यूआरएल पे है, राइट, सॉरी, सो V0 के टेम्परेरी यूआरएल पे। देन आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो एक रिपोजिटरी में, तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, उसमें
टाइटल लिखा हुआ है, देन उसके ऊपर जितने भी इश्यूज हैं, अच्छा यहाँ पे अभी नीचे व्हाइट दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये इसमें खराब चल रहा है, देन मेरे को लगता है डाउनलोड करूंगा तो थोड़े बहुत फिक्सेस हैं, 2-4 फिक्सेस तो ऑफकोर्स करने पड़ेंगे, तो उसमें से हो जाएगा। देन आप देखो जितने इश्यूज होंगे इस रिपोजिटरी में वो यहाँ लिस्ट हो गए, ऐसे लिस्ट होंगे, ये सब यूआई है, लिस्ट हो नहीं रहा है इसमें, वो तो अपन को काम करना है, लिस्ट ऐसे होंगे। देन यहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी ने पैराडाइम जनरेट किया हुआ है, यूज की हुई है आप अपनी, यहाँ पे ऑलरेडी जनरेटेड प्लान दिखेगा उसको, व्यू प्लान, इफ यू विल क्लिक वो वहीं वाले में रिडायरेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा वो भी दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो आप इश्यूज पे सर्च कर सकते हो, सेम गेटअप जैसा है, यूआई कलर एंड ऑल, बटन्स देखो। ओके, वी हैव फिल्टर्स, ये तो मैंने भी अभी देखा कि फिल्टर भी है अपने पास, तो इसमें अपन कर सकते हैं फिल्टर लगा के कुछ करते हैं। और फिल्टर्स अभी काम नहीं करते हैं तो, ओके फिल्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, बट या इट्स स्टिल देयर एंड आई थिंक आई विल रिमूव इट, मेरे को अभी जरूरत नहीं है फिल्टर की, सो मे बी वी आर गोना रिमूव द फिल्टर थिंग, बट या ऑप्शन है अपने पास। देन वी हैव सॉर्ट का थिंग, वी कैन रिमूव दीज, वी कैन जस्ट हैव दिस एंड जनरेटेड प्लान बटन, जो कि अभी डिसेबल्ड है बिकॉज आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल, सारी इश्यू सिलेक्ट कर दी, बल्क एक्शन करना है मुझे, ये बल्क एक्शन एंड ऑल दीज आर जस्ट फॉर डमीज। मेनली ऊपर क्लिक कर रहा है अपन को जनरेट प्लान में, so if you click on generate plan nothing will happen right now because बैकएंड नहीं है। क्या होएगा नॉर्मली पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे को लेके जाएगा इस वाले डैशबोर्ड पे, अब नए वाले पे, ओके until it is loading, anyone is there, nobody is there, no problem, we are still there and we are gonna grind, this is the dashboard, it is gonna take me, and यहाँ पे कब आएगा, जब ये पूरा एनालाइज कर चुका होगा इश्यूज को। पहली चीज मेरे को क्या देगा, ऊपर से टाइटल वेटल देगा थोड़ा सा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हाई इन प्रोग्रेस एंड ऑल थिंग्स, 2-4 बटन है, एक्टिविटी शेयर एंड ऑल, एक्टिविटी एंड शेयर आई एम गोना डिलीट दिस एंड आई एम जस्ट गोना हैव दिस बटन। सो यहाँ पे डाउनलोड करेगा बेसिकली, तो डाउनलोड कर पाए इंसान कुछ भी जेसन वगैरह, ठीक है। देन यहाँ पे टू असाइन, ये जस्ट एक रैंडम असाइनीज वगैरह क्रिएट कर दिए इसने, एंड देन दीज यहाँ पे ये सब है, मोस्टली ये सब चीजें हट जाएंगी, यहाँ पे इश्यूज रहेंगे एंड टाइमिंग्स कर दूंगा ऐड, अपडेटेड ऐड ऑफ कोर्स, असाइनीज हटा दूंगा एंड 2-4 चीजें हटानी रह गई है, बट द मेन थिंग इज दिस, पहले ये मेरे को दे रहा है सजेस्टेड पुल रिक्वेस्ट, तो ये सारी पुल रिक्वेस्ट मुझे क्रिएट करनी है, सजेस्ट कर रहा है, ये सब इश्यूज जब सॉल्व हो जाए तो इस तरीके से आप पीआरस क्रिएट करना, तो इसने मुझे दिया कि ऐसे क्रिएट करना, ऐसे क्रिएट करना, दिस मे बी इफ आई एम नॉट लाइकिंग दिस, मेरे को नहीं पसंद आ रही, मुझे एक बार फिर से जनरेट कर, आई कैन क्लिक ऑन जनरेट and it is gonna generate it and I'm gonna get this true, maybe what do we say, toast bar, and we can see the new generated ones, we have now 3 only, सही जनरेट कर रहा है, कर नहीं रहा है असली में, जस्ट ये दिखाने के लिए, and then we can copy also, we will copy, we are copying the markdown, so if I see here I got the markdown copied, so we can paste it up here, share with our friends, developer friends anywhere. Then the main thing, सबसे ज्यादा मेन थिंग है ये, जो भी टास्क बनाएगा ये हमारा इश्यूज टू एक्शन वाला, कि जो भी टास्क लिस्ट डाउन हो जाएंगे कि ये टास्क होने चाहिए, दोज विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू डू, इन प्रोग्रेस, रिव्यूज, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। मे बी अगर किसी को नहीं काम करना है, जिसका जैसे कि अलग से नहीं बनाना है, ही वांट्स टू डू इन वन ऐप ओनली, यहाँ पे आके मैनेज कर लेना भाई, कौन सी दिक्कत हो रही है। सो सो क्या बोलने वाला था मैं, भूल गया मैं, सो बोलते ही भूल गया, शिट। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मोस्टली सारे टू डूज में आ जाएंगे, सारे पहले तो सब टू डू में आएंगे, देन उसके बाद अगर आपका कोई काम हो चुका है, मे बी यू वांट टू फर्स्ट सी द डिटेल्स, सो यू विल क्लिक ऑन इट, you have a pop-up, you have a detailed title, detailed description, everything detailed, you have a link to the issue, you can go to the issue and check it out. Then अगर मान लो आपने काम कर लिया इस पे, do okay wait a second, maybe you want to edit it, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है टाइटल, आपको कुछ थोड़ा अपना मीनिंगफुल डालना है, यू कैन क्लिक ऑन एडिट, यू कैन ऐड एनीथिंग व्हाट यू वांट, यू कैन सेव इट, सो इट विल बी एडेड, इधर अभी स्टेट पे ऐड हो रहा है बट जो यूजुअली डेटाबेस पे ऐड हो जाएगा, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। ओके, देन इसके बाद अगर मान लो आपका ये टास्क हो गया, आपने कर लिया, यू वांट टू मेक इट ऑन ऑन प्रोग्रेस में भी आप कर रहे हो, तो ऑन प्रोग्रेस में आ गया, मे बी यू हैव डन दैट टास्क, you are set to the review,
and maybe you have done the task. So we have can ban view 100% ready with us. So आप देख रहे हो यूआई पेस्ट लेवल का डन है अपना. देन अपन को बस अब बैकएंड सॉर्ट करना है एंड द ऐप इज फुल फ्लेज्ड वर्किंग एंड मोस्ट यूजफुल फॉर डेवलपर्स. सो या एनीबडी watching or has any question. वैसे तो कोई देख नहीं रहा है, एक ही बंदा कोई देख रहा है, आई डोंट नो. तो या किसी को क्वेश्चन होगा तो नहीं, बट या श्योर इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन कमेंट डाउन if they are watching it afterwards. ओके मेरी मैं अपने आप को ही देख रहा था थोड़ी देर के लिए. तो वो सो अब ये चीज को अपन को पहले एक काम करना है कि मेरे को इसको अपने आप में इंटीग्रेट करना है, तो मैं पहले वो काम करता हूँ. देन वी आर गोना जंप ऑन मेकिंग द बैक एंड फ्लो वाला थिंग, जनरेट द बैक एंड फ्लो. तो मैं ट्राई कर रहा था npm dlx कमांड से, बट इट इज नॉट हैपनिंग. तो मैंने क्या किया था इधर, यू गाइस कैन सी मच. ओके सो मैंने क्या किया था यहाँ पे, इसका zip फोल्डर डाउनलोड कर लिया था. सो आई एम जस्ट गोना एक्सपोर्ट इट एंड या check it out. Okay, so we got our folder and we'll open it up. इसको कोड से ओपन कर देते हैं, काम करते हैं ओपन विद VS कोड. एंड साइड पे से रख के जस्ट कॉपी फाइल्स करनी है अपन को, और कुछ नहीं करना है. Okay, I'm just gonna copy it out. So what are the things which I'm gonna copy it out? Oh, yes, I trust the author. 100% I trust the author. So I'm just gonna firstly copy out the types folder. Copy folder. Okay. तो इसकी कंपोनेंट्स में अभी लिस्ट नहीं रहती, राइट? So yeah, that's a problem. मेरे को चाहिए था कि ऐसे लिस्ट डाउन हो जाए, तो बस बट हो गया, no problem. Okay, then we have styles folder. Do we have anything with styles doing up here? We have not done anything, so no problem. So no need of folders. Lib is already there. Hooks, okay, use mobile and all. I can add those. So 1 second, wait a second. So lib is here, lib is here. Okay, types is here. Nice. Okay, no problem. Okay, I can take the types inside the src folder. I don't know. Yeah, I can take it. And then I can take the hooks folder also inside the src folder. And then the component folders, okay, these are too many files. So I'm just gonna copy all the files. I should have pressed the shift button. Okay, and I'm just gonna take them to here. Sorted. So I've just copied all these things. Now the UI, okay. I will need to download these. I can't directly use them up here. So I will need to download these. So I will download it. Just give me a sec. And then if I go to this app folder, I will go inside the, okay, not, I will go and paste it out. Oh, what the fuck is, so sorry guys if I said something, but yeah, that was so bad. Yeah, sure, I did that. And then this page, it should go inside this page. Okay. Now I think it works, looks good. And it should work fine, but before that, before running the code, I'm just going to install all the Shartsian things. Okay, so just give me a second. I will open up the Shartsian thing. Not here. So this is our plan. See, so आपको पता है whatever the design you see right now is inspired by the design which we yesterday made, and you guys can see it is exactly like it. Yeah. Okay.
It looks so good. Okay. So can we access the private repositories of any user or not? I don't know if we can. Owner, repo, users. I don't know. So if we can't, then there is a small problem, but still it works, I think. So I will need to fix that up. I will see that. That's my point of thing. So no problem. All right. Okay. I will go to next year's. Okay, we have this and how to. I just want to see how to install. Yeah, I will just copy one command. Okay, then I will need to list down all the components here. So there will be one accordion, accordion, ALE, alert dialog, alert, ratio, and avatar. Most of them will be there, but yeah, still I'm okay. Just there is just one button. What the? Okay, badge. Yeah, bread crumb. Okay, we are using breadcrumb. Interesting. I'm using this for the first time in any of the project. I'm just like too much lazy to use this because I don't like calculating the breadcrumb and all filing things. But sure, we can do here because we are already gonna get the repo thing, the repo name and the issue title, so it doesn't make much sense for me. It doesn't. It doesn't. It doesn't increases my task or makes a pressure on me. Yeah, like that. Okay, cart, chart, car, cursor. Where are we using this? Are we even using this? Where? Well, bro. Check box. Collapse. Okay, yeah, we are using this at the best place. Collapsible. COMM. Command. Okay. Context. Menu. Are we using this? No. Dialog. Drawer. Are you using this? No. Um, am I using these all? Let me check. Okay, so yeah, drawer. So we are not using it, bro. So I don't know all these things, but yeah, most of the things we are not using. So I'll try to remove those. Maybe context menu I will check. Yeah, why are you using this? Oh shit. I'm using command. Yeah, we are using it a lot. So yeah, most of the things above we are using, so we'll not touch though. And then I'm gonna. Okay, so we have drop down menu. Yes, we are using it. Okay, drop down. PO down. Menu form over card. Input OTP. Who is using input OTP, bro? I'm just using input. Label. Menu bar. I don't think so, but still okay. Model. Navigation. Menu. Pagination. 46. Oh, we added one time. Pop. Pop over. Okay, then we want progress. Okay, yeah.
we are using progress, but we are gonna remove that because how we are gonna calculate the okay, we can calculate the progress actually. Yeah, we can calculate. Okay, radio, radio group. Okay, resizable. I am not using anywhere. I know. I'm not using it. Yeah. Okay. These are okay. These are all the things. Oh no. Scroll area. Step. Router. Sheet. Sidebar. Skeleton. Skeleton I'm not using, but I'm planning to use it in this project. So maybe I'm just keeping it for that. Okay. Switch table. Tabs. Text. Text area. SP. Poster. Sure. And then okay, I'm not gonna use those total stuff, right? Or if I'm using that, okay, I'm using it. So why it is then sooner is installed, bro? That just doesn't make sense. Toggle group, okay, toggle, and then use mobile. Do I need this? So I will need to first check if there is anything called use mobile. There's nothing called use mobile. So I will just copy these files. Okay, let it take time and install all the things. Till then, I will talk to you guys if there is anyone for talking, and there is no one actually. Okay, I will just remove the toast and toaster, no problem. But you have to before tell me who is using toast. So first in layout you have added, and which I haven't added anything. So it's good. Then in bulk operation you have added. So I have to remove it from bulk operations. Um, yeah, I deleted those. Sure. I will just check it. Okay, I think I did a spelling mistake there. So I will recheck first. Breadcrumb. If it is crumb, yeah. I knew that. I do that.
Where the hell is that written? CRUMB and done. It should work. Hopefully. And if it doesn't, we'll make it running. अब एंगल से है and थोड़ा सा इधर. Perfect. I'm in center now. Okay. So इसके बाद अपन पे काम कर रहे थे, यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे. And then what I did? Button. Who wrote button? Button is already installed. Just fine. Do it now. And that's why I don't love CALNDDAR. CALNDDER. And all those three were in line, yeah. You know, so I messed up all three like one by one, one by one, one by one. Okay, no one is coming here to watch me, bro. What is it? How will that work out? You guys, if you guys won't watch AJ and Code FM, then how it is gonna work out for me, not for you. You guys will do whatever is the thing you want. How it is gonna work out for me? No, no, you tell me how. First tell me and then tell me. See, there is zero concurrent views. Like, does it look good to see zero in front of you? No, right? If you imagine you got a zero in your exam or a board exam, will it look good? No, right? So it is an exam kind of thing for me. Make it like a good number, please. Okay? कोई देख नहीं रहा था इसीलिए पक पक कर लिया कोई देख रहा होता तो चुप पकड़ा हो जाता and even I'm streaming at a good speed right now so you guys should like um at least do good and don't see me caught and caught shit so what were they garden chart it was a chart buddy chart वो chart okay what's the problem with label 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 you know label 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 there's kind of thing called label it's label model 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 looks good what's the problem with model there is a problem with model there is nothing called model
Okay, guys, I will be just back to the thing. Is there is some calls and बस एक मिनट रुको गाइस, मैं आ गया सेटअप करने आ गया। देख पाओगे मेरी स्क्रीन? ओके, कैमरा फिक्स कर दूं एक सेकेंड। एक्चुअली कॉल आ गया था एक छोटा सा, तो वो पिकअप करना था, सॉरी पिक करना था, कॉल पिकअप नहीं करना था। या बैक टू स्क्रीन ही नॉर्मल। सो क्या कर रहे हैं अपन? मॉडल है ही नहीं कुछ, तो मैं क्यों लिखा हूँ यहाँ पे? कहाँ गया, कहाँ गया? नीचे होगा ना ये। सो मॉडल इसने खुद का बनाया है क्या? आई थिंक सो मॉडल करके तो कुछ है ही नहीं। सो हाउ आई एम गोना डू? यार तो ये फिर ये कैसे किया इसने जनरेट, जब यहाँ पे मॉडल का है ही नहीं? तो हाउ डिड इट जनरेट इट? ओके, मेनू बार एंड दिस इज नथिंग कॉल्ड मॉडल। देखना पड़ेगा कहाँ का यूजर है। ओके, दिस इज नथिंग। तो बस ये एक जगह यूजर है, कमांड पैलेट के अंदर मे बी। एंड कमांड पैलेट कहाँ पे यूजर है? कैन एनीबॉडी टेल मी? तो इसको देखना पड़ेगा। हेल्प सेटिंग। ओह नाइस, ये ओपन कहाँ पे हो रहा है? नेम 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 नेम। फिर कौन था? ओके, कीबोर्ड शॉर्टकट। हाउ द कंपोनेंट लुक्स।
ओह कूल, देयर इज समथिंग गुड आल्सो। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, चेक इट आउट। एंड यहाँ पे मुझे बोल रहा है ये कि रवानी से कुछ हो जाएगा। ओह brother, so we even have this thing inside us. Wow, nice. Control K and you. Cool buddy, but I'm not going to use that क्योंकि अपने काम का ही नहीं है इतना ज्यादा। लाइक अगर काम का होता तो I would have using now. It's not of our work for now at least. Got it. So now we will run okay. Okay, pnpm install तो नहीं करना था। Okay, yeah, pnpm run there to run the app and see if it works on our local thing or not. And अगर ये work करता है तो then we are gonna just jump on the backend thing because nobody is watching us. So I will just go on the backend and gonna fix the thing. Uh, like analyze सब कुछ करेंगे बैठ के time pass and then रात को काम करना है of course इस पे। Okay, not here again. Okay, sending it out. Okay, we already have a cool looking landing page and then we have to go to dashboard. Okay, we will first go to dashboard and see what happens. इम्तिहान की घड़ी पास हुई कुछ सारा। ये कहाँ पे यूज हो रहा है कंफर्म डॉगल? बल्क ऑपरेशन जो बच्चों का यूज हो रहा है। इसको फिक्स कर देते हैं ना, एक काम करते रुक जाओ। इसको उधर जाते हैं। ये तो चाहिए था। इसके बाद चाहिए था मॉडल।
we have to remove toast from everywhere. Okay, first of all. टोस्ट तो हटा दो। टोस्ट तो जहाँ दिखे वहां से उसको हटा दो। चाहिए ही नहीं। सो टोस्ट हटाया। पता नहीं मैंने ये बॉटल यहाँ पे क्यों रखी है, बट मुझे बस अच्छी लग रही है तो आई हैव जस्ट केप्ट। नाइस। And private works now. Okay, so we have our dashboard here, and we have some things here, and we have this thing over there. Looks good to me. Okay, looks good. Looks good. Then we are gonna click on this. So we have buttons. Again, the problem is with buttons, so we are gonna fix it up. I'm just gonna fix it up. Okay, this works. This works. Okay, so this is also working. We have delete task. Okay, we are gonna confirm it if we want. Assign task to me, mark as completed. These are not just important things. इसको अपन हटा देंगे, कोई काम की नहीं है। मोस्टली मैं तो इसी को हटा देते हैं बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज। okay, nothing happens if we click there, so yeah, nothing happens, right? Okay, so I will need to go to this is something like the dynamic URL, so इसमें जरूरी नहीं है कुछ भी डालना। Also we can add anything and we will go to that page. Stream is healthy again. Okay, तो अपन यहाँ पे थे ओके, सो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। हेलो DND, ये इंस्टॉल नहीं किया, we did install this. Yeah, I will need to install from the package.json file also something. So मैं इधर जाऊँगा, इस पे भी जाना पड़ेगा मुझे, चेक जस्ट टू कंपेयर ऑल द थिंग्स। पहले तो इसको साइड बाय साइड क्यों नहीं हुआ ये? हाँ, so we just want to install hello page DND. Anything else? All thing looks good. So I will just go ahead and split the terminal. I will do a p npm and this. Now it is gonna install it. Till then, I'm gonna talk. Hello, bye. How are you doing?
Shripad Arts, how are you doing, bro? I remember you from the old live, not live. ऐसा नहीं समझेंगे ओल्ड लाइफ से रिमेम्बर करते नहीं है फिर पहले किसी लाइफ में आप आई थिंक आए थे तुमको याद है ना बट ब्रो हाउ आर यू डूइंग बड़ी बढ़िया ना गुड सिस्टम और बताओ सब बढ़िया कोई दिक्कत परेशानी क्या चैट करें बात ही नहीं होती हम लोग के पास तो कुछ करने के लिए न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हो अच्छा तो ये सब बटन है तो या इग्नोर द कलर्स एंड ऑल पता नहीं क्यों ऐसे खराब कर देता है बट आई विल जस्ट फिक्स ऑल दोस कोई दिक्कत नहीं है so we have these things we have suggestions with us looking fine we have an input and this thing so अपन इसको इधर उधर ले जा सकते हैं and then it works fine basically so yeah everything is working fine for us I will say I will just do this okay everything is working fine for me अब अपन को मेन थिंग करनी है कि बैकएंड रेडी करना है वेयर डू यू वर्क आई वर्क इन माई होम लाइक मैं जॉब नहीं करता मैं स्टूडेंट हूँ so yeah वेयर डू यू वर्क मतलब कुछ समझ रहा थोड़ा सा एक्चुअली समझ नहीं आया actually। ठीक है तो मेरे को उसका बैकएंड फ्लो रेडी करना है तो अपन अब बैकएंड की बात करेंगे बाबू बाबू से बैकएंड क्या बात नाइस 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 आई हैव द फ्रंट एंड रेडी whatever we agreed on details. Let's run all functions name and small details. Uh, and small details. We will need to create also mention the type of them like they will be a normal JS function or an API or it will be in just agent kit or anywhere else ओके तो मैंने इसको लिख दिया कि सारे फंक्शंस की लिस्ट बता दे अकॉर्डिंग टू द फ्रंट एंड जो मैंने तेरे को अभी दिखाया एंड जो भी अपन ने पास चीज़ों में डिस्कस किया था ये सब कुछ सोच साच के बताएगा मुझे तब तक बात करते हैं अगर कोई है तो ओके श्रीपद भाई चले गए शिट भाई इतना खराब हो गया मैं let me see some of my task manager CPU on 63 OBS is using a lot of CPU for me else everything is fine not too much then the memory is mostly used by VS Code and the Brave browser good Brave browser is taking much less like अभी तो 100 हो जाती अगर normal रहता so yeah so GPU 3D GPU engine why is Brave using GPU I don't know but yeah OBS is using GPU can be understandable and then performance okay performance में GPU is doing the decent so you guys can see कौन सा GPU है मेरे पास मतलब पूछ रहे थे PC में कौन सा GPU है ना
I told you guys. Memory I have 12 GB and most of it is getting used. I don't know why. Unused and compressed. Okay. Compressed में uses है वाह भाई साहब. Okay, committed 62 GB. I have committed 62 GB. पता नहीं. ये मुझे भी नहीं पता. Okay, and then disk usage is 0. Use ही नहीं हो रही disk को. Okay. बस ये यूज हो रही होगी because of my Windows, and then this will be हल्का हल्का यूज होगा क्योंकि कोड उस पे लिख रहा हूँ. Wi-Fi is doing it, GPU is doing pause. Can't say anything. So yeah, इसको बंद करते हैं. And then आते हैं अपने main task पे. कहाँ गया? PPT. Okay, yeah. So perfect timing, Aman. Since your front end is ready, let's now break down the complete backend architecture based on everything we discussed so far. The final dashboard and the planner UI. Your use of clerk, supervise, GitHub, blah, 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 ooh. Master plan. Okay. So पहली चीज है API auth user. Why do we need that? I already have that. So ये मेरे को चाहिए ही नहीं. ठीक है ना? Done. This is good. Then is GitHub Connect. Okay, so yeah, we will need this. The API route, okay, saves GitHub access token securely using the what? ये कुछ और था, तो इसको भी हटाते हैं. मेन है ये GitHub repos कनेक्ट करने वाला. तो GitHub repos कनेक्ट किया. API GitHub repos API route fetch and connect users. ओके, तो यहाँ पे पहले अपन GitHub से कनेक्ट कर रहे हैं क्लग से. हाँ, तो ये बेटर है. क्लग से कनेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे स्टोर कर दिया. फाइन, इट वर्क्स फाइन. Then API route for fetching issues done. It will be done. Okay. Then we have a plans and create. API route triggers the ingest agent to. Okay. Now it is ingest. है ना? Ingest is coming in place. So अब API plans and create. यहाँ पे जाएगा ingest चालू हो जाएगा. Input में एक repo जाएगा and then issues की ID जाएंगी. No, पूरे issues जाएंगे. Side effect. Side effect, okay. Side effect. Okay. Triggers ingest workflow to generate tasks, PA, CTAs, saves a raw issue, snapshot and metadata. Done. Ingest functions or generate plan. हाँ ठीक है, ये सब generate होगा. This is okay. Ingest वाले को अपन बाद में देखेंगे. Then the main thing is API plan saves. So ये save करेगा, which I of course will be called. नहीं कि मैं इसको of course उस पर call कर दूँगा ingest के बीच में. So this will be not a separate route. वो ingest के अंदर included हो जाएगा. And then API plans and repo ID, so get all the list. हाँ, so of course ये list वगैरह लाने के लिए API, but इनके लिए मैं API create करूँ कि direct supervisor से call करूँ, client से call करूँ. API create, इस पर API create. So इसके लिए API रहेगा, then plans ID के लिए API, सबके लिए API वगैरह ही रहेगा mostly. Then API plans and plan ID and then update task. So update भी हो रहा है तो we'll need to do card operation. So yeah, update also होगा. Then API export plan and plan ID format MD, CSV and JSON. Okay. API route generate exportable versions of version. Okay, done. And one second. Export. The main thing in export. कौन सा format में होगा and all. ये वाला चीज थोड़ी देखने हैं. Okay, then utility API or return the canonical API. Okay, so this will be this. Okay, अब ingest का architecture इसमें दिखाया है कि generate plans, so husky trigger इससे होगा. Then fetch the GitHub issue data, so data पहले fetch करेगा. Then infer with Gemini generate task list and ETS, ठीक है. Grok से PR suggestions बनवा देगा, ठीक है. Save to superbase and notify the front end and revalidate and emit event. Okay, done. Auth flow. तो क्या होगा, ये यहाँ पे सुपरबेस सेव करेगा तो सुपरबेस से फैच करेंगे अपन, है ना. तो ये बैकएंड में ही हो जाएगा कुछ, देन वहां से फैच करेंगे अपन.
So auth flow, okay, auth flow, super base and async sync, okay. So store इतना ही super base and okay, ये सब तो पता है अपन को कैसे करनी है. Use material to protect dashboard and okay, work fine, ये सब पता है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है. Super base tables, okay, super base की tables बनानी है. Okay, this is okay. कोई देख रहा है क्या? Nobody is seeing, no problem. So final function checklist. So this is the final function checklist. Okay. These are all the functions and APIs. Done. Looks good to me. मेरे को तो ऑलमोस्ट सारी चीज अच्छी लगी. दो चार चीजें सही नहीं थी. आई विल फिक्स इट माई सेल्फ. पीपीटी को ज्यादा नहीं बताऊंगा. इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ओके इट इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द लाइफ बिकॉज 1 घंटा परफॉर्मेंस किया था एंड देन इट इज 1 hour and something. ओके सो द मेन थिंग आप लोग मेरे को ही देख पा रहे हो राइट. सो द मेन थिंग इज इसमें जनरेट करके दे दिया है मुझे क्या क्या फंक्शन चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए. अब अपन को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, पहले इसको क्लर्क इंप्लीमेंट करना है, देन क्लर्क विद गिटअप करना है. तो वो देखना है कि उसको कुछ आईडी वाईडी मिल रही है तो देन उसको मिला जुला के इंप्लीमेंट करना है. बेसिकली इंटीग्रेट करके करना है. देन ओके क्या था, देन मुझे इसको सुपर बेस से भी इंटीग्रेट करके रखना है ऑटोमेटिकली जैसे अपन ने पिछले वाले में किया था. सेम थिंग वी विल डू. इसके बाद मुझे सुपर बेस में सारी टेबल्स क्रिएट करनी है. सो आई विल डू दैट, क्रिएट द टेबल्स. देन द सेकेंड थिंग इज ऑल्सो उसके बाद क्या करना है अपन को एक एक करके फंक्शन बनाने. तो व्हाट आई विल डू इज पहले मैं ingest वाला फंक्शन बनाऊंगा जो मेन पार्ट है अपना, जो मेन वर्क करेगा वैसे ही करेगा. हाँ मेन वर्क करेगा जैसे करेगा. देन उसके बाद जो आलतू मतलब सॉरी पहले बनाऊंगा मैं गिटअप वाले कि गिटअप वाले सब फ्रेश हो जाए. देन ingest वाला बनाऊंगा. देन उसके बाद बनाऊंगा मैं कर्ड ऑपरेशन विद सुपर बेस का. ठीक है. तो इट मे टेक 2 days. तो कल तक मुझे लगता है ingest तक मैं कंप्लीट कर दूंगा एंड देन उसके बाद सुपर बेस वाले अपन परसों करेंगे. एंड ऑल्सो गाइज देर मे बी लाइक थिंग कि मैं कल लाइव ना आऊँ आई डोंट नो. या आऊँगा तो बहुत छोटा ही आऊँगा, 1 घंटे के लिए आ जाऊँगा. सॉरी 1 घंटे के लिए आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो आज के लिए इतना ही. दिखते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए. वैसे मुस्कुरान तो कुछ नहीं, बस दिखते ही रहिए मुझे एंड कोड करते रहिए. मिलते हैं अपन कल विद द बैक एंड रेडी. सो या बाय बाय गाइस. एंड जो भी रिव्यूज हो आपके डैशबोर्ड के प्लीज कमेंट डाउन एंड या बाय बाय गाइस.